Hemispherical depression is cut from the face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. बच्चों अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने आपको क्या किया था, ये क्यूब था और क्यूब के ऊपर मैंने क्या किया था, एक हेमिस्फेरिकल बाउल को मैंने रखा था और क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय और दिस इक्विपमेंट. इस चीज़ का टोटल सरफेस एरिया व्हाट विल बी इट. नाउ दिस टाइम व्हाट दे आर डूइंग इज, ये क्यूबिकल बॉक्स आपको दिया है और उसमें से इस तरह का क्या कर रहे हैं, कट करके निकाल रहे हैं. ये हेमिस्फेरिकल पार्ट इसमें से निकाल दिया जा रहा है. हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है. पिछली बार उसको जोड़ दिया था, इट वॉज एडेड. लास्ट टाइम हेमिस्फेरिकल पार्ट वॉज एडेड. दिस टाइम हेमिस्फेरिकल पार्ट इज कार्व्ड आउट. इसको निकाल दिया जा रहा है. तो निकाल दिया जा रहा है तो आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग solid. So hemispherical depression is cut out from the face of cubical wooden box such that the diameter L of the hemispherical is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. See here, diameter of the cube, edge of the cube is the diameter of the hemisphere. So what I want is, see a diameter of hemisphere is equal to L. Diameter of hemisphere is equal to edge of the cube. Diameter of the hemisphere is equal to edge of the cube, edge or side of the cube, and both are equal to L centimeters or L units, whatever it is given. So if the diameter is L, children, then radius will be equal to diameter divided by 2, and that is equal to L by 2. L by 2. Just like in the last problem, the same thing here we have to do. We want the area of remaining solid. So area of remaining solid, this is very important sentence. Area of remaining solid is equal to curved surface area of cube, surface area of cube is equal to area of remaining solid is equal to surface area of cube plus what is it, this part is removed. So curved surface area of hemisphere minus the area of surface minus the area of सर्कल. सेम जो लास्ट टाइम आपने लिखा था वही यहाँ पर है. देखिए माइनस, इसको माइनस नहीं करना, बिकॉज वंस यू रिमूव इट, इवन आफ्टर रिमूविंग इट ऑल्सो कर्व्ड पार्ट विल बी देयर. इट इज नॉट रिमूव्ड एंड थ्रोन आउट, द कर्व्ड पार्ट विल रिमेन इन द क्यूब. इसको निकालने के बावजूद भी इस तरह का एक खड्डा तो होगा, इस तरह का डिप्रेशन तो होगा. डिप्रेशन इज देयर, सो यू कैन नॉट रिमूव इट आउट. एंड व्हाट इज देयर अगेन, ये टॉप में से सर्कुलर डिप्रेशन भी होगा. एंड दिस पार्ट विल बी देयर, दिस पार्ट विल बी देयर, दिस पार्ट विल बी देयर. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज 6 into edge square, 6 multiplied by edge square plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of hemisphere is 2 pi r square minus area of circle is pi r square. So this, if I simplify, children, this is 6 into edge square, edge is L square, and 2 pi r square minus 1 pi r square will be equal to 1 pi r square. So this, if you simplify again, this is 6 into L square plus pi into radius is L by 2 because diameter is L. So L by 2 square. So this again, if you further simplify, this will be equal to 6 L square plus pi L square by 4. Pi L square by 4. If you again take the LCM, this will be equal to 24 L square plus pi L square divided by 4.
If you take the LCM, this is 4 into 6, 1 into 4. So 24 L square plus pi L square, and if you again, then this will be equal to L square I am taking common, children, and this by 4 I am taking common here. So L square by 4 is equal to 24 plus pi. This much of what is it? Square centimeters. You are finding the square here, so this much of square centimeters. So this is how you can find the solution for this problem. The next problem is a medicine capsule is in the form of a cylinder with two hemispherical stuck to each of its end. See here, this is a medicine capsule. It is a enlarged version, magnified version. Actually capsule will be very small in size, but we have drawn a bigger capsule here, and what he says is it is stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. I'm sorry, it is surface area. So see here, surface area of the capsule will be equal to curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the two hemispherical parts. And here, since the radius is same, I need not have to give any separate symbol for it. So if I want, I can write the last step directly. अगर मुझे चाहूँ तो लास्ट स्टेप मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. क्या लिखना है आप थोड़ा देखिए कि इसको किस तरह से. एक्चुअली व्हाट चिल्ड्रन डू इज, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन व्हाट दे डू, they find the curved surface area of cylinder separately, curved surface area of the hemisphere separately. It involves lot of calculation. So my sincere advice to you children is follow the steps what I say, and then I think the problems will be very easy for you. See what steps I am following here, and intentionally I am trying to do the last step first so that you will understand the steps involved during the initial process. See what is asked to me is what is its surface area. So what I am writing here is surface area of capsule. Surface area of capsule is equal to curved surface area of cylinder. Surface area of capsule is equal to curved surface area of cylinder plus 2 multiplied by curved surface area of hemisphere. 2 multiplied by curved surface area of hemisphere. Okay children, curved surface area of cylinder plus 2 times, because 2 hemispherical parts are there, you need not have to calculate separately. Once only you calculate, multiply by 2. So what you are going to write here is curved surface area of cylinder formula you know very well, 2 pi r h, 2 pi r h into curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. 2 pi r h plus 2 pi r square. Radius is same here. So what I am going to do here is I am going to take 2 common, pi common, and r also is common. 2 is common, pi is common, r is common. तो what remains here, क्या बच जाता है ब्रैकेट के अंदर, h plus 2r, h plus 2r. प्लीज फॉलो दिस स्टेप. कैप्सूल का अगर सरफेस एरिया आपको चाहिए तो सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया जोड़ दीजिए. नेक्स्ट व्हाट हैपन्स हियर, 2 pi r अगर मैंने कॉमन ले लिया तो h plus 2r you will get. Now if you try to solve this problem, let us see what happens. 2 multiplied by the value of pi is 22 by 7 multiplied by radius. Children, diameter is 5 millimeter. So if diameter is 5 millimeter, then you can find the radius. Radius will be equal to diameter divided by 2, that is 5 divided by 2. Diameter divided by 2 means what? 5 divided by 2. And here h I don't know, in place of r I am writing 5 by 2. Sir, what is the height of the cylinder? H is what? H stands for height of cylinder. That is what I want to tell you. Height of the, see, total height given to us is 14. Total height given to us is 14. If you want the height of the cylindrical part, then I will have to subtract the height of the two hemispheres. Now you will say, sir, hemisphere has no height. Very good, exactly right. But hemisphere radius itself can be counted as height. Or directly I can say that total height of the capsule minus radius of the two
hemispheres will be equal to the height of the cylindrical part. So height of cylinder or cylindrical part, I can say rather, cylindrical part will be equal to total height is 14 minus 2.5 plus 2.5. सर कहाँ से आया 2.5 और 2.5? इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो इसका रेडियस होगा 2.5, इसका भी डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो इसका भी रेडियस होगा 2.5 मिलीमीटर। तो यानी क्या होगा, 14 में से अगर 5 माइनस कर दूं तो जो बचेगा 9 मिलीमीटर, वो होगा हमारा हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो टोटल हाइट में से मैंने 2.5 को माइनस कर दिया तो ये हो गया बच्चों 9। सो देखिए रेडियस तो हमको पता था मगर यहाँ से हमको हाइट वाज रिक्वायर्ड। सो दैट्स व्हाई व्हाट एक्चुअली डू हैव डन इज लास्ट स्टेप फर्स्ट लिखा है। आप बोलोगे सर ये आप कैसे टीचर हो कि लास्ट स्टेप फर्स्ट लिखते हो? ये बताने के लिए आपको कि बच्चों सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, सिर्फ अगर इसका सोल्यूशन हमें चाहिए तो हाइट की ज़रूरत है। एंड फॉर गॉड सेक डोंट फाइंड सेपरेटली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। कैलकुलेशन 2 बार होगा, बहुत लंबा होगा। सो व्हाट आई एडवाइज यू इज डोंट डू इट। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 विल बी कैंसल्ड चिल्ड्रन। सो दिस विल बी इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 110 डिवाइडेड बाय 7. Now this here also what happens is again 2 and 5/2 cancels. देखिए यहाँ पर मैंने कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं लाता हूँ मैं। As far as possible I try to keep you away from the decimal point because I feel that children commit mistake when it comes to decimal point. जब भी डेसिमल पॉइंट आता है बच्चे गलती करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो 9 प्लस हो सकता है कि मेरा मानना गलत भी हो आपके बारे में, मैं सबके लिए तो ऐसे नहीं करता हूँ, मगर आम तौर पे children commit mistake while the decimal point is there. So what is happening here is 2 cancels with 2. So 9 plus 5 is children 14. And now this if you simplify, 7 1s are 7, 7 2s are 20. So 220 I am going to get cubic millimeter. Because कैप्सूल है काफ़ी छोटा है, हमने आपको बड़ा कैप्सूल दिखाया है, मगर आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो कैप्सूल आपको पता है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज the curved surface area of capsule is not cubic millimeter, it is square millimeter. So the total surface area of capsule is, or surface area you can say, of capsule is 220 cubic millimeter. So children, I hope you might have understood both these problems. They are very very simple. Try to understand it. It's simple. Curved surface area of cylindrical part plus curved surface area of hemispherical part. So finally we'll give you the curved surface area of the capsule.